RCC columns. Now move on another slide. Columns. Let's start with columns. Columns are vertical supports which take the loads of floors, beams, walls, lintels and transmit to the ground or transmit to the substructure. The failure of column can thus destroy a whole structure. These are carefully designed, planned and constructed. These can be made into any of the following shapes. These are square or rectangular column, round or circular column, I shape, hexagonal and octagonal. But you have only square or rectangular and a circular column in your syllabus. Now the reinforcement. Reinforcement of RCC column. The first of all, longitudinal reinforcement. In longitudinal reinforcement, mean reinforcement should not be less than 0.8% of concrete area. जो कि हम longitudinal reinforcement, mean reinforcement यूज करते हैं इसमें, that should not be less than 0.8% of the concrete area. जो हमें concrete area है column का, उसका 8% that should not be less than 0.8% of the concrete area, or not more than 8% of the gross area. जो टोटल एरिया होता है कॉलम का, उस 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. And from practical point of view, it should not be more than 4% of the cross sectional area of concrete. 4% से ज़्यादा हम नहीं रखते हैं, तो 4% तक हम रखते हैं इसमें. Now on another slide. Now the diameter of bar to be not less than 12 mm. जो कि हम कॉलम में मेन reinforcement यूज करते हैं, उसमें जो डाया बार होता है, साइज ऑफ बार, डाया बार जो होता है, that should not be less than 12 mm. 12 mm से हम ज़्यादा लेते हैं उसमें. And for circular columns having spiral winding, spiral helical reinforcement will have at least 6 numbers for vertical bars. जो हम reinforcement लेते हैं, like this is circular column here. If it's a circular column here, and we use spiral reinforcement. But for this circular column, we cannot use less than 6 numbers of mean reinforcement. जो कि मेन reinforcement bars हम यूज करते हैं, वो हम 6 नंबर से कम नहीं करते हैं.
In square and rectangular, we use only minimum we can use 4 numbers, but in circular we cannot use less than 6 numbers. And another slide. So now transverse reinforcement. It's of two types, lateral ties and helical or spiral reinforcement. Lateral ties हम यूज़ करते हैं in square or rectangular columns, and helical and spiral reinforcement we use in circular columns. This is here helical reinforcement जो कि मैंने इसमें दिखाया अभी. And another slide is there, lateral ties. Now for lateral ties, some spacing should be there. तो जो spacing है वो हम कितना रखते हैं, that's 48 times the die of transverse reinforcement, जो कि हम reinforcement transverse के लिए यूज़ करते हैं या spiral के लिए यूज़ करते हैं. उसका जो डाया होता है spacing हम रखते हैं 48 times of the dia of the transverse reinforcement. Like अगर हमने 6 mm किया यूज़ for transverse reinforcement, तो 6 into 48. Now और least lateral dimension of column, अगर हमने square लिया तो least lateral उसमें जो both sides उसका same होता है. तो लेकिन अब अगर हमने rectangular लिया तो उसमें एक side आता है small, तो वो small size का हम ले सकते हैं. जो smaller side में हमारी dimension होगी वो हम ले सकते हैं for spacing of lateral ties. Now lateral reinforcement. Now diameter of lateral reinforcement क्या हम यूज़ करते हैं, हम करते हैं minimum 5 mm और 1/4 of dia bar, 1/4 of dia bar. अगर हमने 25 mm लिया dia bar या हमने 30 mm का लिया तो उसका 1/4 या तो 5 mm minimum. 5 mm से ज़्यादा हम लेते हैं. Usually from practical point of view we take 6 mm for lateral reinforcement. Now another slide is here, that's spiral reinforcement. Spiral reinforcement there is a pitch जो कि हम जैसे lateral reinforcement में हम spacing रखते हैं और इसमें हम pitch बोलते हैं. Pitch is the distance from this point, ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया है. तो now it should be it should be not less than 75 mm and or 1/6 core dia of a column. Core dia of column. Core dia means reinforcement to reinforcement, distance between reinforcement to reinforcement without cover. जो dia होता है that's called core dia. तो 1/6 of core dia हम लेते हैं pitch. Now the diameter of this helical reinforcement, or we can say spiral reinforcement, we take 5 mm dia or 1/4 of vertical reinforcement. 1/4 of vertical reinforcement. Now another slide is there. This is cover. For longitudinal reinforcement, जो हम cover use करते हैं, that's 40 mm और dia bar. जो हम वर्टिकल reinforcement के लिए यूज़ करते हैं dia bars का, या तो वो लेते हैं हम कवर या तो मिनिमम 40 mm और whichever is greater. जो dia bar और 40 mm में ग्रेटर वन होगा वो हम लेते हैं कवर के लिए. एंड फॉर 20 सेंटीमीटर dia columns और अंडर, जो छोटे छोटे साइज के कॉलम्स हम बनाते हैं, उनका जिनका 20 सेंटीमीटर लेस देन 20 सेंटीमीटर dia होता है कॉलम का, वायर
वहाँ पे क्या हम करते हैं, वहाँ पे जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट हम यूज़ करते हैं जो कि लेस देन 13 mm होता है, उसमें जो कवर होता है वो हम करते हैं 25 mm यूज़। 25 mm हम स्मॉल कॉलम्स के लिए यूज़ करते हैं जिनका डाया जो होता है, कॉलम डाया वो होता है 20 सेंटीमीटर तक या लेस देन 20 सेंटीमीटर, और जिनका जो स्टील है वो हम लेस देन 13 mm यूज़ करते हैं, लाइक 12 mm करेंगे या 13 mm, उसमें हम 25 mm ही कवर रखते हैं। Now on another slide, this is a drawing of column. Now how to draw, और क्या क्या shown होगा हमें किस सेक्शन में, like this is plan, if it's plan of column तो क्या हमें उसमें visible होगा, in it foundation draft is shown, vertical bars, size of column and lateral reinforcement are shown by thick lines। ठीक है, ये हम ड्रॉ भी करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन shows the height of column, longitudinal bars, spacing of ties, foundation concrete, foundation steel plane, depth below or ground foundation, like क्या क्या हमें वर्टिकल सेक्शन में दिखेगा। दिस इज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ यस, this is a vertical section of column। This continuity here, and now this column here, and this is footing of this column। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वर्टिकल सेक्शन ऑफ कॉलम, एंड इसमें आपको दिखेगा ये जो है रेनफोर्समेंट, यहाँ पे आपको रेनफोर्समेंट वर्टिकली दिखेंगे, एंड हेयर ऑल्सो रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट यहाँ पे भी लगेगा, बेस में भी, फाउंडेशन में भी, एंड इसमें कॉलम में भी। एंड दिस इज वर्टिकल सेक्शन, एंड प्लान में भी ऐसे स्क्वायर आपको दिखेगा इसमें। नाउ जो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम करेंगे कि हाउ टू ड्रॉ RCC कॉलम।